Hello friends, my name is Falguni Chaudhary and I am from Gandhinagar. I feel great to say about this 111 personalized course which I purchased almost 1 month ago, and I got to know more information about this course from one of my best friend. Then I called to the Ramandeep sir, and Ramandeep sir provided me a wonderful educated ma'am was the tenor of my speaking as well as the writing task. And to be honest, at the first glance I am not very good at the stage of the writing and speaking as well. So ma'am did lots for me and she taught me very nicely, and I strongly recommend it to you guys. If you want to get your desired band score, you should must purchase this course. And I heartily thankful for both of Jaslin ma'am and Ramandeep sir. Friends, and how are you doing today? Thanks for joining for today's video. You're watching YouTube channel Raman Alts Coaching, and I'm your arts expert Ramandeep Singh. I hope you have already subscribed this channel and you are getting the notifications of my newly uploaded videos. Students especially wait for the videos related to the speaking module that I share on this channel, and this video is very important if you are going to take your IELTS exam in the month of December or in January 2022. Students always have this question on their mind that when they are going to get the list of the new cue cards. I hope you all are familiar कि IELTS cue cards एक certain time बाद थोड़े से change हो जाते हैं. For example, from January to April, then May to August, and then afterwards September to December, ये हमारे पास नए लिस्ट आते हैं. और usually अगर मैं बात करूं जैसे जनवरी में अब नए क्यू कार्ड्स का अपडेट आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 15th और 20th of December से you will see that students are going to start sharing their experience से उनसे एक नया क्यू कार्ड पूछा गया. तो अभी जो स्टूडेंट 20th के आसपास IELTS स्पीकिंग देने जाएंगे, they can definitely expect कि उनसे नए क्यू कार्ड पूछे जा सकते हैं. और by the first week of January हमारे पास complete list available हो जाती है that how many क्यू cards are changed. It's not कि सभी के सभी क्यू कार्ड चेंज होंगे. At an average 25 या 30 मैं कहूँगा क्यू कार्ड चेंज होते हैं. और प्रीवियस जो लिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरा स्पीकिंग बूस्टर बाय करते हैं तो उसमें सारे क्यू कार्ड्स रहते ही रहते हैं. But as soon as students are going to get new cue cards and they're going to start sharing their experiences with us, हम IELTS speaking booster में ये update करना start कर देते हैं. That means we help you to remain up to date with the latest cue cards that the examiners are asking. So उसके लिए आप definitely ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. सबसे पहले इसी चैनल पर आपको नई क्यू कार्ड्स के अपडेट मिलेंगे, और अगर आपको चाहिए उनका रिटन वर्जन तो स्पीकिंग बूस्टर में आपको वो मिलेंगे. और कोई भी बुक मार्केट में पूरी लिस्ट आने के बाद लॉन्च होती है, लेकिन ओनली स्पीकिंग बूस्टर आपको उससे कम 15-20 दिन पहले से ही अपडेट देने स्टार्ट कर देता है. सो ऑल दैट आई वांट टू से, अगर आपने इन डेट्स में एग्जाम ऑलरेडी बुक कर लिया है तो प्लीज डू नॉट पैनिक, बी कॉन्फिडेंट, अच्छा ही एग्जाम होगा. रिमेन ट्यून. आपने वैसे भी हंड्रेड्स ऑफ क्यू कार्ड प्रिपेयर किए, इतने स्मार्ट आपको वैसे होना चाहिए दैट गिवन टाइम अगर आपको कोई नया क्यू कार्ड पूछ भी लेते हैं तो आपको एकदम से कोई आइडिया रिलेट करने में ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए. हाँ, लेकिन अगर कुछ ऐसा क्यू कार्ड आ जाता है कि बिल्कुल आपको समझ नहीं आता, फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि बोलिएगा जरूर, क्योंकि नहीं बोलने के 0 बैंड मिलेंगे, लेकिन बोलने के कुछ तो बैंड आपको डेफिनेटली मिलेंगे. सो आई रिपीट, इफ यू हैवंट परचेज IELTS स्पीकिंग बूस्टर, आप डेफिनेटली बाय कर लीजिए, क्योंकि 15 to 20 दिसंबर के आसपास से हम उसे अपडेट करना शुरू कर देंगे. कोई भी स्टूडेंट ये बुक जब बाय करता है तो उसको अगले 6 महीने तक का एक्सेस मिलता है. अभी बाय करने वाले स्टूडेंट्स को जनवरी टिल अप्रैल तो क्यू कार्ड्स के अपडेट्स मिलेंगे ही मिलेंगे.
प्रीवियस क्यू कार्ड्स भी मिलेंगे और मार्च में जब मई में नए क्यू कार्ड्स आएंगे वो भी अपडेट आपके पास फ्री में आ जाएंगे। बट आई बिलीव तब तक आप डेफिनेटली अपना IELTS क्लियर कर चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो माय डियर फ्रेंड्स, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड लीव सम कमेंट्स फॉर मी। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप IELTS स्पीकिंग बूस्टर बाय करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं।